या ओके नाइस। अभी जो ज्वाइन किया है उन्होंने भी अपने प्रेजेंट करके डाल दो चैट्स में। द पीपल हु हैव जॉइन्ड जस्ट put present in the chats. And yeah, we could start with the cues today. Bijit, you are ready, right? Yep. Yeah, you should continue. Like you should start with the session. So guys, we will be starting with the cues. किसी को कोई doubts है अभी तक? Otherwise, we will be starting. Yeah, Abhijit, let's go. So everybody can see my screen, right? Yeah, please respond. Is my screen visible? Okay, thank you. Yes. So good evening to everyone. Welcome to the DSA Bootcamp organized by the GDSC ICOER. So what have we seen up till now? We'll just have a recap. So first we have seen the arithmetic operations, then loops, and we have seen some OOP concepts like abstraction, encapsulation, polymorphism, and inheritance. And then we turn towards the data structures that are arrays, linked list. And today we are going to move to the next topic, that is queue. So I'll be trying to make you understand what is a queue and how are we going to implement it. So let's move to the next slide. So what is our today's agenda? So today we are going to learn about queue introduction. So in the introduction, I'll be telling you what is a queue, on which principle does the queue work. Then we'll be seeing some uses of queue, the real life uses of queue. Then we'll be seeing the representation of a queue, how a queue is represented, or what is the structure of a queue. And then we'll be seeing some operations that are performed on a queue. This part will be covered in the introduction. And in the next point, in the queue implementation, we'll be implementing a queue using C++. So basically, I primarily use C++ for implementing data structures. So I'll be live coding the implementation of queue in C++. And then we'll be seeing some limitations of a queue. So what are the limitations of a queue, a general queue that we'll be seeing, and why are we using a circular queue or D queue? Because of those limitations of a queue that will be seen in the next. And at last, we'll be having the summary. So let's start with the queue. So what is a queue? The formal definition of a queue says a queue is defined as a linear data structure that is open at both ends, and the operations are performed in, first out, that is FIFO order. So what is this FIFO order? So first in, first out, by the name you can understand, मतलब जो भी first अंदर आएगा queue के वही element सबसे first बाहर जाएगा queue के. So a queue in a real life, we know the queue is like a line. मतलब एक कतार में सब खडे होते, एका लाईन मध्ये जशी सगळी उभे राहतात, तसं एका क्यू मध्ये हे सेम क्यू आपण कम्प्युटर मध्ये इम्प्लिमेंट करणार आहोत प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये. सो ही क्यू जी आहे त्यात आपण म्हणू शकतो की जे फर्स्ट व्यक्ती आहे जो सबसे आगे खड़ा है वो सबसे फ्रंट में है, इट इज एट द फ्रंट ऑफ द क्यू. और जो सबसे पीछे खड़ा है दैट इज एट द रियर ऑफ द क्यू. So these front and rear are going to be very important in this implementation of a queue. And why is it so important? We'll be seeing that in the next few slides. So let's talk about the FIFO principle. The FIFO principle of a queue. A queue is like a line waiting to purchase tickets, where the first person in line is the first person served. मतलब जो सबसे पहले आएगा लाइन में, जो सबसे आगे खड़ा है, that will be served first. अब ऐसा तो नहीं है कि कोई अमिताभ बच्चन जैसे आएगा और बोलेगा कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है. इट्स नॉट लाइक दैट. In the queue, the first person will be served first. So the position of entry in a queue ready to be served, that is the first entry that will be removed from the queue, is called the front of the queue. मतलब जो सबसे आगे खड़ा है, हम क्या बोलते हैं जब भी एक लाइन में जब हम खड़े होते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि वो बंदा सबसे आगे है. आगे मतलब क्या? ही इज एट द फ्रंट ऑफ द क्यू. सो जो सबसे आगे है वो सबसे पहले बाहर पड़ेगा, उसे सबसे पहले टिकट मिलेगी. और जब कोई नया पर्सन क्यू के पीछे आके लगता है तो हम क्या बोलते हैं कि क्यू के लाइन के पीछे लग जा. पीछे मतलब कहाँ? रियर में लग जा. सो सिमिलरली द पोजिशन ऑफ द लास्ट एंट्री इन द क्यू, जो नया एंट्री है, दैट इज द वन मोस्ट रिसेंटली एडेड, इज कॉल्ड द रियर ऑफ द क्यू. मतलब जो सबसे बंदा लास्ट में आया है दैट इज एट द रियर ऑफ द क्यू. So now we'll be seeing some uses of a queue.
By using a queue in a printer system, you can efficiently manage and process print jobs, reduce the risk of print errors, and ensure that the jobs are completed in a fair and orderly manner, following the principles of FIFO. Now, why are we using this queue in a printer? Suppose this is a network, और इस network में एक printer है और 3 PCs है. So if all these 3 PCs are making a request to print their documents, so what is the printer going to do? It cannot print all the 3 documents at the same time, right? So वो क्या करेगा? एक queue maintain करेगा. The printer is going to maintain a queue where the first job, मतलब जो job सबसे पहले आए, जो request सबसे पहले PC ने भेजी है, that will be given the first place. यानी first in, first out. So it will have the first place. और जो next PC जो request send करेगा, that is the second PC, it will go at the second place, and the third PC will go at the third place. In this way, the printer knows कि हमें सबसे पहले कौन सा job करना है, second कौन सा करना है, और फिर third कौन सा करना है. So this is a real world example of maintaining a queue in a printer system, जहाँ पे we can know which job is to be performed first, second, and third. So this is a structure of a queue. As we can see, it is represented in a horizontal way. It has a rear and a front. So why is this rear and front so important? Because the enqueuing, मतलब जो भी हम enqueue करेंगे, list में, queue में जो हम add करेंगे element, that will be added at the rear. मतलब enqueuing जो होगी, enqueue function जो होता है, it will be happening at the rear. And dequeue मतलब deletion जो होगा, that will be happening from the front. क्योंकि as I said, कि एक लाइन में सबसे आगे जो बंदा खड़ा होता है, वो सबसे पहले बाहर पड़ेगा. मतलब deletion will be done from the front. और उस deletion operation को in this programming world we call as dequeue. And the enqueue function is used for insertion, which is done at the rear, मतलब पीछे. So we'll be seeing some operations on a queue. So the first function we'll be seeing is the isFull function. So what does this do? To check whether the queue is full or not. So how are we going to check if the queue is full or not? So we have a condition over here, rear equal to size minus 1. So why are we checking this condition? Let's see. So this is a queue. This queue is having a size of 7, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 is the size of this queue, and it has the maximum index of 6 because indexing starts from 0. So अगर इसका maximum index is 6 and its size is 7, so how are we going to know if this queue is full or not? As we know, जहां पर भी हम queue में एक element add करते हैं, insert करते हैं, तो हमारा rear जो है वो increment होते जाता है. Why? Because जब भी हम queue में एक element add करते हैं, बंदा अगर queue में add होता है, तो उसका rear आगे जाता है, मतलब वो पीछे add होने लगता है. So if the rear is equal to size, मतलब 7 minus 1, that is 6. If the rear is equal to size minus 1, then we can say that the queue is full. So is full, ये function check करेगा कि ये हमारा queue full है या नहीं, and it is going to do this using this condition, rear is equal to size minus 1. The next function is the isEmpty function. IsEmpty function is used to check if the queue is empty. So the condition we'll be checking here is front equal to rear equal to minus 1, meaning both front and rear both should be minus 1. So why should they be minus 1? So this is an empty queue. Empty queue है, इसकी size 6 है, इसका maximum index 5 है, पर यहाँ पर कोई भी element present नहीं है. So what are we going to do? At this time, both front and rear are pointing to an imaginary index that is minus 1. अब ये index जो है minus 1, that is not an actual space allocated in the memory. We are just assigning it minus 1 because there is no element in this queue. अगर हम इसको 0 कर दे, if we assign front and rear equal to 0, then both front and rear will be pointing to this position, which is 0, but we do not have any element over here. So we cannot point it to 0. मतलब हम यहाँ पे front और rear को 0 नहीं कर सकते. Therefore, we initialize front and rear to minus 1. And if both are minus 1, then we can say that the queue is empty. So next function we'll be using is enqueue, and enqueue will be having a parameter. For here, we have written data. It can be any parameter. You can give a name to the variable, anything you want. So it inserts element to the end of the queue. So as we have discussed earlier, whenever we insert an element in a queue, that element is always inserted at the rear. मतलब वो last में add हो जाएगा.
so it inserts element at the end of the queue. तो अगर एंड ऑफ द क्यू में ऐड हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रियर जो पॉइंटर है हमारा, रियर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाय 1. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे द टेल दैट इज द रियर पार्ट वाज पॉइंटिंग एट 4. जब 8 इंसर्ट नहीं किया था तब द रियर पार्ट वाज पॉइंटिंग एट 4, बट जब हम 8 इंसर्ट करेंगे इस क्यू में, दैट टाइम द रियर इज पॉइंटिंग एट 8. सो व्हाट इज हैपनिंग, रियर इज गोइंग टू बी रियर प्लस 1. मतलब रियर जो पहले इंडेक्स पे था 0 1 2 3 पे था, वो 3 प्लस 1 पे आ जाएगा फोर्थ इंडेक्स पे. द सिमिलर वे विल सी हाउ dq वर्क्स. dq रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंटल साइड ऑफ द क्यू. फ्रंट साइड से हमें एलिमेंट डिलीट करना है यानी रिमूव करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1. जस्ट लाइक nq हमने क्या किया था, पहले फ्रंट को असाइन किया था, फ्रंट होगा सबसे पहले इंडेक्स पे यानी 0th इंडेक्स पे. पर अगर हम कुछ एलिमेंट डिलीट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्रंट पहले 0th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था उसे 0 प्लस 1 करना है, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1. तो वो क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा. So in this way we can delete an element and then we can increment the front pointer to point to the next index. So in this way these are the 4 functions which are primarily going to be used in implementing the queue. So अगर इस point तक किसी को doubt होगा तो please पूछ लीजिए. If anyone has any doubt regarding queue up till this point, you are free to ask. अगर फास्ट हो रहा होगा तो प्लीज बता दीजिए. विल प्रोसीड स्लोली. ओके, ऑल क्लियर, अंडरस्टूड. ओके, थैंक यू. सो लेट्स सी using animation how a queue actually works. So here our first function we have used enqueue8. We are passing a parameter 8. So what is happening here, we are trying to insert an element 8 in our queue. सो एज आई मेंशन्ड, यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, फ्रंट और रियर दोनों को एक इमेजिनरी इंडेक्स को पॉइंट करते हैं विच इज -1. दिस इज नॉट अ रियल मेमोरी दैट इज एलोकेटेड टू द एरे, पर यहाँ पे हम एक इमेजिनरी इंडेक्स को पॉइंट करते हैं. सो बोथ फ्रंट एंड रियर आर पॉइंटिंग टू -1. सो नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर वी execute this enqueue function, our 8 is going to be inserted at the 0th index. So when our 8 is added to the queue, our both front and rear both are going to point to the 0th index. अब हमने देखा था कि जब हम enqueue करते हैं तो सिर्फ rear ऐड होता है, पर यहाँ पर हमने front queue ऐड किया है, because जब हम पहले एलिमेंट को ऐड करते हैं, the first element that is added in the queue वही एलिमेंट हमारा फर्स्ट भी होता है और लास्ट भी होता है. जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है, इसलिए बोथ फ्रंट एंड रियर बोथ आर पॉइंटेड टू 0. यहाँ पे सिर्फ रियर नहीं इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे फ्रंट भी इंक्रीमेंट होगा व्हेन वी आर एडिंग द फर्स्ट एलिमेंट. सो प्लीज मेक इट क्लियर, दिस इज द ओनली कंडीशन वेयर वी इंक्रीमेंट द फ्रंट एज वेल in the enqueue function. So after this, when we execute the second enqueue function, that is the enqueue14, then our next element, that is 14, is going to be inserted at the first index, and now our rear is going to be incremented. Now as I mentioned earlier, जब भी हम enqueue function call करते हैं तो सिर्फ हमारा rear increment होता है, front नहीं होता. So as you can see in this case, only our rear is incremented. So when we call the next function, that is enqueue5, our next value, that is 5, is going to be inserted at the second element, second index. So अब क्या होगा, हमारा rear फिर से increment होगा and it will be pointing to the second index. So in the similar way, 20 is added to the third index and our rear is pointing to the third index. Now हमारे चार ही एलिमेंट्स जो है वो इंसर्ट हो गए हैं क्यू में. अब हम क्या करने वाले हैं, we are going to call the dq function. Now when we call the dq function, it does not need a parameter because we are not inserting a new value, we are just deleting the existing value. So dq, as we know, is done from the front. मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, so जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था वो सबसे पहले डिलीट होगा. So whenever we call the dq function, our first element is going to be deleted.
And now what is going to happen is that front is going to be incremented by 1. So as you can see, our front incremented and it is now pointing towards the first index. So now when we call the next DQ function, we are going to delete 14 and we are going to increment the front, and it is now going to point towards the second index. In the same way, 5 is going to be deleted and the front is going to point at the third index. And now when we call the DQ function for the fourth time, that is the last time, what is going to happen? जब हम last time call करेंगे, जब front और rear दोनों भी are pointing towards the same index, that is front is pointing towards the third index and rear is also pointing towards the third index. As you can see, front is pointing towards 3 and rear is also pointing towards 3. So now when we delete 20, what is going to happen? Now the queue is empty. Now what is the condition when queue is empty? Both front and rear are pointing to -1. So what is going to happen? Here front is going to -1 and rear is going to -1. So why does this happen? जब हमने देखा कि हमारा लास्ट एलिमेंट 20 था, तब हमने 20 को डिलीट किया, तब वी हैड एम्प्टी क्यू. अब एम्प्टी क्यू है तो हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं. सो व्हाई नॉट वी जस्ट initialize the front and rear to -1, so we can have a new queue. मतलब जैसे कुछ हुआ है नई क्यू में, we have a new and fresh queue, we can insert the element in it. So keep this condition in mind कि जब front and rear both are equal to, मतलब same index को point करते हैं, तब we initialize front and rear both to -1. So किसी को doubt है यहाँ तक? If anyone having any doubt, please ask. No doubts. Okay. So the only conditions you have to keep in mind are जब हम first element insert करते हैं at the 0th index, we have to increment front and rear both as well. Front और rear दोनों भी increment करने हैं and they both are going to point at 0. And one more condition you have to remember is when front and rear both are pointing to the same index. Like for example, यहाँ पे अगर 2 index को दोनों भी point कर रहे होंगे, 2 में एक last element होगा, उसको डिलीट करने के बाद हमें बोथ फ्रंट और रियर को -1 को इनिशियलाइज करना है, सो दैट वी हैव अ न्यू क्यू. सो हाउ आर वी गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस? सो वी आर गोइंग टू हैव 4 functions: is empty, is full, enqueue and dequeue. So for implementing the is empty function, we are going to check the condition if front and rear both are pointing to -1. If both are pointing to -1, then we have to return true, and if not, we have to return false. So as we have seen in the previous slides, both front और rear अगर दोनों भी -1 को point कर रहे होंगे, तो R is empty, मतलब हमारा जो Q है वो empty है, and that condition becomes true. So we can return true. And here we have used the return type as boolean, which has 2 values, true or false. So the second function is full function. Is full कब होगा? हमने देखा कि हमारा Q फुल कब होता है? जब हमारा रियर जो है वो साइज -1 के इक्वल होगा. मतलब हमारा जो मैक्सिमम साइज होगा, अगर हमारा साइज 7 है और हमारा रियर अगर 6 को पॉइंट कर रहा है, दैट इज देयर लास्ट इंडेक्स, देन आवर Q इज सेड टू बी फुल. सो वी आर गोइंग टू चेक द कंडीशन इफ रियर इज इक्वल टू साइज -1, then the Q is full. So return true, or else you may return false. So using these 2 functions, we are going to code the enqueue and dequeue functions. अब enqueue करते वक्त हमें क्या याद रखना है कि अगर queue में ऑलरेडी सारे इंडेक्सेस पे कुछ तो एलिमेंट है, मतलब सारी जगह भर गए हैं, तो we cannot enqueue a new element in that because all the spaces are already occupied. So enqueue करते वक्त we are going to make use of this is full function. इस full function को हम क्यों यूज करेंगे? To check if the queue is already full. अगर ऑलरेडी फुल होगा तो हम कोई भी एलिमेंट एनक्यू नहीं कर सकते. सो विल बी गेटिंग अ मैसेज क्यू इज फुल, और एल्स इफ द क्यू इज नॉट फुल, देन विल बी चेकिंग द कंडीशन इफ दिस एलिमेंट टू बी एनक्यूड इज द फर्स्ट एलिमेंट. क्योंकि हमने देखा था कि अगर हमारे क्यू में हम कोई भी एलिमेंट फर्स्ट टाइम इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसको हमें फ्रंट इक्वल टू जो -1 होता है उसको 0 पे इनिशियलाइज करना पड़ता है. मतलब फ्रंट और रियर दोनों को इंक्रीमेंट करना पड़ता है. That is why we will be checking a condition if front is equal to -1.
if front is equal to -1, मतलब हम जो element insert कर रहे हैं, that is the first element. Therefore, we are going to initialize front to 0. And rear mandatorily increase होता है. हर वक्त जब हम enqueue function call करते हैं, तो rear is going to be compulsorily incremented because कोई भी नया एलिमेंट पीछे जाके लगेगा लाइन की, मतलब रियर साइड पे, तो रियर इंक्रीमेंट होगा. एंड देन आइटम्स जो हमारा एरे होता है उसके रियर इंडेक्स पे हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा. सो दिस इज द एनक्यू फंक्शन. और डीक्यू करते वक्त सॉरी मेंशन करना रहेगा कि यह एनक्यू के वक्त हमें पैरामीटर पास करना पड़ता है which is going to be the element which is going to be inserted in the queue. So this is the next function, dequeue function. Dequeue function is used to delete an element in the queue. So to delete an element in the queue, first we are going to initialize a variable. We are going to declare a variable which is going to store the value of the element that is. So we'll get a message saying queue is empty. Or else, मतलब अगर queue हमारा empty नहीं है, तो we'll be storing the value of the element in the queue in the variable that we declared over here. And then we'll be checking the condition. जो condition हमने last में देखी थी कि front equal to rear, मतलब अगर ये last element है queue में, तो both front and rear both are going to be initialized to -1. So that we are just going to increment the front. मतलब जब हम एक queue में से कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो we increment the front. The same way we are going to increment the front, and then we'll have a statement saying that the deleted element is the element that is the variable that was stored over here. So these are the 4 functions that we are going to use while implementing the queue. So anyone having any doubt in these 4 functions? Yeah, Harsh. I just wanted to ask that can we add an element at a specific index in queue? No, because queue follows the first in first out principle, right? Because जो element सबसे पहले insert होगा वही तो सबसे पहले out होगा. That is why we cannot add an element in any random order, right? Okay, then that means for only special cases queues are used, right? Yeah, for only special queues. Because in the printer example we saw the printer is going to maintain a queue in which the jobs are going to be ordered. So कोई भी job ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते ना हम. जो order में वो job आए हैं उस order में हमें वो place करने पड़ते. That is why we use the FIFO principle over here. Yep, got it. Thanks. Okay, thank you. So now we'll be moving towards the coding part. So let's open VS Code here. We have our DSA Bootcamp folder. We have a new file called q.cpp. So let's include our header file, which is iostream. So here I'll be defining a variable, define size 5. So what have I done here? Over here, I have defined size variable to the value 5. So this size is now globally assigned to 5. मतलब हम जहां पर भी size ये variable use करेंगे वहां automatically it will attain the value of 5. So here using namespace standard. So now we'll create a class named Q. Now this queue will be having some variables. Now we are going to make these variables as private. ये private क्या होता है? एक access modifier होता है. जब हम किसी variable को private access modifier में लिखते हैं, मतलब those variables are going to be accessible by the class itself and not by any other class or the main function. मतलब हम जो private access modifier में जो भी variables डालेंगे, वो main function से भी हम access नहीं कर सकते. So the data in private variables cannot be manipulated even by the main function. So here we'll have an array of size, मतलब 5. We'll have a front and a rear variable which will point towards the indices of the front and the rear of the queue. So now we are going to create a constructor. A constructor is a specialized function that is called whenever an object of this class is created. मतलब
जब हम इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा. And why are these constructors used? They are used to initialize the variables, initialize the object to some value. अभी ये फ्रंट और रियर दोनों को कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें उन्हें कुछ वैल्यू देने के लिए, जो डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे. सो द फ्रंट इज इनिशियलाइज्ड टू -1, द रियर initialized to -1 as well. So now our front and rear both are pointing to -1. So now we'll be coding the is empty and is full functions. So the return type is boolean, which will return either true or false. So first we'll be coding the is empty function. So is empty function, and here we are going to check the condition front is equal to rear is equal to -1. As we have seen, if front and rear both are pointing to -1, that means our queue is empty. So if this condition is met, then we can return true. And if not, we can simply return false. So this is our is empty function. So now let's code the is full function. Now while coding the is full function, we need to check the condition to see if the queue is full. So when is our queue full? When our rear is equal to size -1. We have seen जब हमारा rear is pointing towards the index that is 1 lesser than the size, then we can say that the queue is full. So here we can return true, or else we can simply return false. So we have successfully coded the is empty and is full functions. So इस दोनों फंक्शन में किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिए, because now we are going to use both of these functions to code our NQ and DQ functions. We are going to take help of these functions to code the NQ and DQ function. So now let's move to the NQ and DQ function. So while we code the NQ function, we are going to set the return type as void, because we are not returning any value, we are inserting a value in the queue. So void NQ, and here we are going to pass a parameter which is going to be our data. So this data will contain the value that is going to be stored in the queue. So we have a parameter over here in the NQ function. So NQ, for NQing, we check the condition, is the queue full? So we are taking the help of this is full function. If the is full function returns true, meaning the queue is already full, so we cannot insert any values. So we are simply going to return a statement saying queue is full, and we are going to return out of the function. So why are we going to return out of the function? Because the queue is already full and we do not need to insert any element. So we cannot perform any further operations. So we return out of the function. Else, if our queue is not full, we can insert the function. But here also we need to check if our front is pointing to -1, meaning is this the first element that is going to be inserted in the queue? If this is the first element that is going to be inserted in the queue, we need to increment the front as well. We have to initialize front to 0. So in this way, we have checked the condition if this is the first element that is going to be inserted in the queue, and if it is the first element, then we need to increment front as well. And the rear is going to be incremented by default, because जब भी हम एक queue में कोई element add करते हैं तो हम rear को by default increment करते हैं. So we do not need to give a new condition to increment the rear. It is going to be incremented by default. So we can say array के rear index में we are going to store the data. जो data हमें यहाँ पे as a parameter मिला, that is going to be stored in the index pointed by the rear. इस array के rear index में ये data store हो जाएगा. Now we can write statement saying we have successfully
inserted the value that was stored in the data. So this is the working of enqueue function. In enqueue function, we are first going to check if the queue is full. If it is already full, we are going to return a statement saying queue is full. We are going to return out of the function. If not, if the queue is not full, then we are going to check if the element to be inserted is the first element. If it is the first element, then we are going to initialize front to 0, and then the rear is going to be incremented by default, and then we can store the value, the element we got through the parameter into the rear index of the array, that is the queue. So this is the enqueue function, and now we are going to code the dequeue function. So void dequeue, and dequeue is not going to have any parameter because we are not inserting any value, we are just deleting the value. So it is not going to have any parameter. Int data. So why this int data? We need a variable to store the value that is going to be deleted. So we have declared a variable called data over here. So while dequeuing, we check the condition, is the queue empty? If the queue is already empty, then we cannot delete any element. So we'll return a statement saying queue is empty. So if this function is empty, returns true, then we can say that the queue is empty, and we can return out of the function. If not, if our queue is not empty, then we are going to store the front. Now what have we done over here? हमने क्या किया यहाँ पे, जो front वाला element है, जो front index पे जो element है हमारे queue के, that is going to be stored in the data variable. So over here we can have the condition. We have another condition, front equal to rear. So why have we given this condition? To check whether this is the last element in the queue. As we have discussed earlier, if this is the last element in the queue, then both the front and the rear need to be initialized to -1 to start a new queue. So over here, we'll initialize front to -1 and rear to -1. And if we do not have this condition, if front is not equal to rear, if we are not having this condition, then we can simply just increment the front, because front हमें वैसे भी increment करना है जब we use the dequeue function. Now we can print the deleted element data and key. So now we have successfully coded the dequeue function. Expected statement over here. Return statement. Okay, now it should not give an error. Okay, fine. Sorry, it was my bad. So here in the dequeue function, we have checked the condition if the queue is empty or not. If the queue is already empty, then we are going to return a statement saying the queue is empty, and we are going to return out of the function. If the queue is not empty, means we have a data that can be deleted. So we are going to store that data in this variable we have initialized over here. So we have to check another condition if the front is equal to rear, meaning अगर ये element जो हमें delete करना है, that is the last element in the queue. So we are going to initialize both front and rear to -1 to start a new queue, or else we are simply going to increment the front. So this was about the dequeue function, and now we have successfully coded all the 4 functions. But सिर्फ ये 4 functions code कर कुछ नहीं होगा. हमें to view the queue, we need a function to display the queue.
So to display this queue, you just need to use a for loop. Elements in queue. Okay, so in order to display all these elements, we need to run a for loop. Now this for loop is going to run from the front to the rear of the queue. Why? You just see an example. So if we are having an element over here, the first element over here at the first index, so this front is going to point towards this index. And if we keep on adding some elements like 1, 2, and 3 in this queue, then our rear is going to be incremented from 0, 1, 2 to 3. Now when we are displaying this queue, we need to run the for loop from the front index, that is from the 0th index, to the rear index, that is the 3rd index. So why are we going to run this from front and rear? That should be clear now, so as to print all the elements from the first index to the last index. Now why not run this for loop from the 0th index? Because every time when we run the for loop, it is not the case that your first element will be at the 0th index. मतलब अगर हमने already कोई element dequeue किया है, मतलब delete किया है, so that element is not present over here. मतलब वो front up increment होके first index को जा रहे हैं. So जब हम for loop जब लगाते हैं, that time we cannot initialize int I equal to 0. Because now at the 0th position, there is no index, no element present over here. So now our front is pointing toward the first index, that is the starting of the queue. Now the starting of the queue has become 1. Therefore, हमें ये for loop जो लगाना है, that will be starting from the front and ending at the rear. So for int I, now it's going to run from front to I is then equal to rear and I plus plus. So our for loop is running from front to the rear. Now we are going to just print individual elements from the array, and we are going to give a space in between so that the elements are not stick together. We have some space in between. So now we have coded the display function as well. Now we have all the functions ready that we need to implement a queue. So now we can start with the main function. Now in the main function, int main, first what we are going to do is we are going to create an object of this queue class. To create an object in C++, we just need to write the name of the class, and then we have to write the name of the object. Now we have created the object of the class queue with the name queue. So now using this queue object, we can call the functions of the queue class. So first we are going to enqueue a value, for example 5. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारी जो queue है उसमें हम insert कर रहे हैं value 5. So in the same way, we are going to add some more values. So this is, by the way, this is the shortcut to copy the line down, which is Alt plus Shift and the down key. So you can just copy the line down. So 5, 14, 20, any random values. So now we have called the enqueue function 4 times. मतलब हमारे queue में अब 4 elements होने चाहिए. So to display this 4 elements, we need to call the display function. So अब output क्या आना चाहिए? If anyone has any idea, in what order is our output going to be? Anyone in the chat? Same as above listed in the queue. Yeah, right, Satyam. Why is this showing an error? Class private है क्या देख एक बार क्यों? Oh, right. Sorry, my bad.
Just all these functions needs to be public. Sorry. So because of this access modifier, these all classes uh, were gone into a private mode. That is why I was not able to access it from the main class. So all clear now. So we can run the code. What happened? सेव कर Thank you. Okay. So as we can see, first we inserted the value 5, then 14, then 8, and then 20. And now the elements in our queue are 5, 14, 8, and 20 in the order they were inserted. First in 5, that will be first served 5, and then the last that was inserted will be at the last position. So now when we dequeue, what is going to happen? Now when we call the dequeue function, what should happen? The first element in the queue, that is 5, should be deleted because it follows the first in first out principle. So when we run this code, we have deleted the element 5. So now our queue only contains 14, 8, and 20. Why? Because we called the dequeue function over here, which deleted the element which was at the front, which is 5, and now we are only left with 14, 8, and 20. So this was a simple example of implementing a queue using an array. As we can see here, we have used an array. So there are multiple ways of implementing a queue. We can use linked list as well, which will have one advantage over using an array, that is the size of the queue will be variable. Yeah, Mohit, thank you so much. So here we have implemented the queue using an array which has a fixed length. मतलब यहाँ पे जो size है वो हमने 5 assign करके रखी थी. That is why our queue was of the size 5. But if we want our queue to be size independent, we can use the linked list data structure to implement this queue. So now moving on to the next thing. So limitations of a queue. As you can see in the image below, after a bit of enqueuing and dequeuing, the size of the queue has been reduced. मतलब हमने क्या किया, हमने 5 elements enqueue किए थे और उसके बाद 2 elements dequeue किए. अब हमारे पास क्या है, 3 elements are present in the queue. But if now we call the enqueue function, we are going to get an error saying the queue is full because our rear is pointing to size -1, that is 4. But we are having this 0 and 1 position empty. So how can we use these values? So after rear reaches the last index, if we can store extra elements in the empty space, we can make use of the empty space. इस empty space को use करने के लिए, we are going to have a variation of a queue that is called the circular queue. This is implemented by a modified queue called the circular queue. Circular queue में क्या होगा? The rear is going to be connected to the 0th index, that is the front of the queue. So when the front, that is the 0, is empty, our rear can successfully go to the front and then we can insert the element at the 0th index. So how are we going to implement this? So let's see what is a circular queue. A circular queue is the extended version of a regular queue where the last element is connected to the first element, thus creating a circle-like structure. So circular queue is represented in this way. You can see after 7, we are going to the 0th index. Like if all the 7 indexes are full and then we use the dequeue function to delete any element, then we can successfully go from the 7th index to the 0th index because this is a circular queue and we can insert the element at the 0th index. But now the question arises, how are we going to connect the first and the last index? So this is very simple. A circular queue works by the process of circular increment. That is, when we try to increment the pointer and we reach the end of a queue, we start from the beginning of the queue. Here, the circular increment is performed by modular division with the queue size. So what is this modular division? In arithmetic operations, you might have learned about this modulus operation. So what does this modulus operation do? Divides
whenever our dividend is divided by the divisor, we get a quotient and a remainder. So this modulus operator returns the remainder. So using this simple line rear equal to rear plus 1 modulus size, we can convert this simple and regular queue into a circular queue. So how is this going to be done? So here we have called the NQ and DQ functions. Now let's see how this is going to work. So when you call the NQ for the first time, here NQ5, our 5 is going to be inserted at the 0th index. And as this is the first element, our front and rear both are going to be incremented. And now when we call the NQ function, only our rear is going to be incremented. Similar for 8 and similar for 14. But now when we call the DQ function, our first element, that is 5, is going to be deleted and a front is going to be incremented. The same way, 20 is going to be deleted and front is going to be incremented. But at this time, when you call the NQ function, NQ26, अगर ये एक regular queue होती, a general queue होती, तो हमें एक error आ जाता कि the queue is full because our rear is already pointing to size -1. That is the third index. That is the last index. But हमने यहाँ पे rear equal to rear plus 1 modulus size किया है. तो यहाँ पे क्या होगा? Now our rear is containing the value 3. But यहाँ पे क्या होगा? 3 plus 1, 4. Modulus size. What is the size? 1, 2, 3, 4. So 4 modulus 4. 4 divided by 4 gives us 0 remainder. So what is going to happen? This rear is going to contain 4 modulus 4, 0, 0. The value 0 is going to be stored in the rear. So now when we call the NQ function, our rear is going to shift from 3 to 0. That is the beginning of the queue. And now we can add the 26, the element 26 to the first index. So what have we done? We have successfully used this empty space in the queue without wasting any memory. यहाँ पे हमारे पास जगह फुल थी, इसलिए हमने जो रियर था उसे लास्ट से बिगिनिंग तक शिफ्ट किया और वहां पे हमने एलिमेंट इंसर्ट किया. So now we need to see the coding implementation. This. So circular. I think we are already over time. Nilesh, should I code this or should I just explain the code which I have already? Because we are already over time. Should I explain it? I think basic queue code has been like explained and typed. Yeah. This could be explained directly. You don't have. Okay, fine. So just have to folder. Here we have a circular queue. So this code is very similar to the queue, which is a general queue. The only difference over here is instead of incrementing the front and rear by only 1, like this rear, which was going to be incremented while NQing, here we are going to write rear equal to rear plus 1 mod size. The code we saw over here, instead of incrementing the rear, we are going to increment it in such a way that rear plus 1 size, modulus size is going to be stored in rear, and then we can store the data over there. And same for DQ. For DQ, we are going to write front plus 1 modulus size. So the only difference over here is instead of just incrementing the rear and front, we are going to modify it a bit and write rear equal to rear plus 1 mod size and front equal to front plus 1 mod size. So in this way, we can create a circular buffer in a queue, which will convert our simple queue into a circular queue, so that we can use the space that is empty space that is there in the queue without wasting any memory. So if you see over here, we have called the NQ function 5 times. So here our size is already 5. So when we call the NQ function 5 times, we are going to have 5 values in the queue, right? So when we call the DQ function, our 5 is going to be deleted from the queue. But when we call the NQ function again, 26, now our rear is pointing to 4.
because we have already called the enqueue function 5 times. So when we call the enqueue function, it should give us an error. But because this is a circular queue, instead of giving us an error, it just inserts the element and we do not get any error. So in this way, we can implement a circular queue. So everybody understood this circular queue? Yes. Yeah. Any doubts? I know थोड़ा सा fast हो गया है ये circular queue, but the only thing you have to change over here is instead of incrementing the rear and front directly, you just need to modify it a bit, and you have to write rear plus 1 mod size and front plus 1 mod size. And the same needs to be done while writing the display function. Display function में भी I plus 1 mod size करना पड़ेगा. So with this simple modification, you can change a simple queue into a circular queue. So everything clear till this point? If anyone has any doubt, please ask. If no doubts, then we can move to the next part. All clear? Okay. Okay. So this was a little meme. So instead of linear queue, we are using circular queue because it is more memory efficient. So now we are going to see another variation of a queue, which is called the D queue, which is double-ended queue. So D queue or double-ended queue is a generalized version of queue data structure that allows insert and delete at both ends. Operations on D queue. So in a D queue, यहाँ पे क्या होता है? Insertion और deletion ये both sides से होता है, front और rear से. In a general queue, the deletion was done from front and insertion was done from rear. But instead of this, in a D queue, we can perform both the operation, deletion and insertion from front and rear as well. So यहाँ पे क्या functions add हो गए? Is full and is empty तो वैसे हो गए जैसे पहले थे. यहाँ पर दो functions add हो गए. enqueue front to perform insertion from front. Then we have enqueue rear to perform insertion from rear. Then dq front to perform deletion from front and dq rear to perform deletion from rear. So that was it about DQ. And yeah, what we saw today, what is a queue, what are the uses of queue, how is the representation of a queue, how is the queue represented, the structure of a queue. And we saw some operations that are the 4 functions. Then we implemented the queue using arrays. Then we saw what are the limitations of a linear queue and how it gave rise to a different variation of queue, which is the circular queue. And then I saw the implementation of a circular queue where we have to modify the increments like front plus plus को हमने क्या किया front plus 1 mod size किया. And then what we saw what is a double-ended queue. So that was it for the presentation, and now I think we can move towards the quiz. So Nilesh. Yeah, guys. So we'll be moving ahead with the quiz. So before that, let me ask you one question to all of you. Can you guys give me a difference for a circular queue and circular linked list? What is the basic difference? How they are different? Like you guys have learned about these two concepts, right? So any one of you give me an explanation or any difference that how circular linked lists are different from circular queue. What is the basic difference? I mean, दोनों तो circular है, obviously. They both store the data. So what is the difference? In circular, I think that in the circular array concept there no overhead exists, but in the linked list it exists. Overhead. Can you explain it?
क्या होता है वो? वो वाले कंसेप्ट में क्या इसमें मीन्स ओवरहेड वाला कंसेप्ट, जैसे कि ये लिंक लिस्ट वाले कंसेप्ट में क्या होता है कि जो हर नोड जो होता है ना वो उसके रेफरेंस नोड से लिंक हो रहा है ना, लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में। या ओके, लेट मी लाइक गाइस, मुझे एक बात बताओ, इफ यू इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू विथ लिंक लिस्ट, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट और सर्कुलर क्यू में क्या डिफरेंस होगा? लाइक बोथ आर इम्प्लीमेंटिंग लिंक लिस्ट ओनली ना, बोथ आर द सर्कुलर क्यू। सो मेरे को बताओ उसमें डिफरेंस क्या होगा इफ आई एम यूजिंग लिंक लिस्ट ओनली टू इम्प्लीमेंट क्यू। अभी हमने देखा अरेज कैसे यूज किए जाते हैं सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर क्यू, बट इफ आई एम यूजिंग लिंक लिस्ट सपोज, तो लाइक क्या होगा? Yeah, let me tell you the basic difference or the most important point. You are like तुमने उसको like या भूल गए या फिर तुमने उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी. That's okay, Harsh. If you have answer. Like this queue. Pause there. Yeah, okay. टाइप कर दे चैट बॉक्स में. If you could. Otherwise, I'll be telling you. Until then, let's join the quiz. Let's not get stuck. Yeah, about that, the difference is its principle. It follows the principle of what? FIFO, right? First in, first out. तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, तुम डिलीशन या फिर इंसर्शन कहीं भी किसी भी एलिमेंट्स का कर सकते हो, राइट? इफ यू ओनली यू नीड टू डू इज तुम्हें एड्रेस अटैच करना पड़ता है, लेफ्ट या राइट जो भी एलिमेंट होता है उसका. बट इन सर्कुलर क्यू वी डोंट हैव दैट. वी नीड टू लाइक फॉलो द रूल दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो रिमेंबर दिस. क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड पूछेंगे लेकिन आंसर बहुत ही इजी रहेगा. दैट कुड बी लाइक या प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. रिमेंबर दिस. द प्रिंसिपल ऑफ द क्यू इज FIFO and you need to by heart it. अपने ब्रेन में डाल दो and go get to the quiz. We'll be starting the quiz. So I'm only getting about 15 20 participants. What about others? 43 people are there. आज वॉलंटियरिंग कौन करेगा? मोहित. मेरे को चलता है. हाँ, तो डिफॉल्ट है, मैंने वॉलंटियर. ओके प्राप्ति. ओके देन यू गो अहेड. एक दिन मोहित, एक दिन प्राप्ति, दोनों का 2-2 दिन हो जाएगा. चलो शेयर योर स्क्रीन. लेट्स गो. या फिर तुम्हें डाउट था? या ओके, प्रेजेंटेशन के लिए था. ओके देन guys, we'll be starting with the quiz. Go and join quickly. I'm only seeing about 30 participants. बाकी 10 मर गए क्या? Quickly. I'm counting the people who are in the quiz and in the meet. So I need the people on both platforms. Okay. ऐसे नहीं है मीट ज्वाइन कर दी तो तुम्हारी लाइक अटेंडेंस हो जाएगी. So go to the quiz and let's start. There you go. First question. What is the primary principle that defines a queue data structure? अभी बताया मैंने. So I don't think anyone would be lacking there. And also Prapti, you should answer your questions a bit later. Last के 3 seconds में आंसर करो, ठीक है? Yeah. And the correct answer is FIFO only. So 92% are correct, 8% people are wrong. And there you go.
So Dave is the first one, then Nikita, then Kirti, Kshitij, and there you go. The second question. Which of the following operation is used to add an element to the rear of a queue? क्या लगता है guys? Yeah, and the correct answer is NQ only. We use NQ operation to insert an element. So remember this. And the next question. In a queue, if you want to remove and retrieve an element from the front, which operation should you use? There you go. So deletion के लिए we have implemented and we've known the operation DQ. अभिजीत ने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, खुद इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाया. इट्स एन इजी कोड, सो यूड बी नोइंग इट. लिंक लिस्ट जिन्होंने कर लिया उनके लिए क्यू भी इजी होगा, खुद से डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम. सो या, दैट वाज द करेक्ट आंसर, DQ. 90% people have the correct answer. And the next question. So this is an interesting question which is related to my interesting question. अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ये था. So what do you think? डायनामिक साइज के लिए क्या यूज कर सकते हैं? It's not about the fixed size. Okay, fixed size के लिए तो obviously array यूज करते हैं, but it's about the dynamic size. So linked list are used. For the fixed size we use arrays. Remember this one. Linked list size can be dynamic, not the arrays. And the next question. What is a double-ended queue or the DQ primarily used for? Okay. And yeah, the correct answer is allowing elements to be added and removed from the both ends. Most of you are correct. So yeah, that was good one. And the next question. Which of the following is an example of a real world analogy for a queue? ये तो पिक्चर के साथ ही लाइक अभिजीत ने दिखाया था, सो आई डोंट थिंक किसी को कोई इशू होगा. Yep. The correct answer is people waiting in a line at the theme park. The next question. What is the time complexity of an NQ and DQ operation in a standard queue implemented with an array of size n? Time complexity लिया था तो अभिजीत? नहीं लिया था. Yeah, but by the pointers you can guess it. Okay, तुम्हें सिखाया गया था, right? Like time complexity कैसे निकालते हैं if you are searching for something and all. तो जिन्होंने guess किया correctly of 1, then you are right. That's on point, money. But those people who have not correctly guessed, maybe तुम्हारे concepts थोड़े कच्चे हैं. So एक बार फिर से रिवाइज कर लो अभी तक जो हुआ है. Okay. Which of the following is not a common application of queues? What do you think? Yep. And I think most people are correct with the DFS. So yeah, next question. In a circular queue, what happens when the rear pointer reaches the end of an array? तो क्या होता है? इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था शायद, if you remember.
कोई फॉर्मूला बता सकता है चैट में? Yeah, answer is that the rear pointer is reset to the beginning. But let me get the formula for this one. You know, guys, what happens to the rear? What happens with the pointer? I think प्राप्ति आंसर कर लेगी. बाकी guys क्या मर रहे हो क्या? Don't you remember the formula? Yeah, Sangmeshwar. Yeah, you got it right, I guess. Kanchan. It should be modulus, okay? Real plus 1 modulus size, not the divide. Okay then. The next question. So, what is the purpose of using a circular buffer in implementing a circular cube? So, this is the last, I think, final question of the quiz. So, yeah. And the correct answer is to efficiently utilize memory, and 60% people are correct. So yeah, so we have the leaderboard, and the top threes are Nikita, Mohit, and Dev. After that, we are followed by Amit, Kumbar, Kanchan, Sanika, Mayank, Vicky, Aditya, Sangmeshwar, and list goes on. So yeah, that was all about the queues and how they're implemented and how they're like what happens with the queues and their applications. So I think Abhijit has taught well and he has implemented it easily to like understand. सबको लाइक अंडरस्टैंड हो चुका होगा जावा के बच्चे और सीपीपी के, उनके लिए तो इजीली लाइक समझ गया कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इट. आफ्टर लाइक फॉर पाइथन पीपल, for those also this is an easy. So I think yeah, it was a great session. So have applause for Abhijit quickly. Yeah, nice. Kshitij, yeah bro, have any query? Kshitij Shelar, कोई डाउट है bro? No. Okay. So hand down कर दे, hand raise है तेरा. Okay then, I will be starting with this second half, which was supposed to be first half. But yeah, it's about the stack. So yeah, Nikita, you should continue. My screen is visible, right? Yes, but थोड़ा आवाज हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? ठीक. हेलो, I think तेरे वो like mic में कुछ कर सा आवाज आ रहा है थोड़ा. वेट. हेलो, अभी काफी बेटर am I है. audible now? Yes. Okay. So good evening everyone. हम लोग आज स्टैक टॉपिक देखने वाले हैं.
I will share the PPT. सो स्टैक के बारे में हम लोग देखेंगे. स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्यू से काफी मतलब समझने में इजी है, तो हम लोग उसे देखेंगे अभी. तो स्टैक क्यू में क्या था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एलिमेंट, मतलब जो भी हम लोग एलिमेंट एक सपोज हम एक बॉक्स में एलिमेंट्स रख रहे हैं, तो उसमें क्या था कि फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन स्टैक में उससे उल्टा है. जो एलिमेंट लास्ट में हम लोग प्लेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये बुक है, तो वो बुक हम फर्स्ट मतलब पहले निकालेंगे. So this is the principal used for the stack data structure, which means the last element added to the stack will be the first one to be removed. So it is similar to the stack of books placed in a box. मैंने यहाँ पे box क्यों मेंशन किया, क्योंकि अगर ये इमेज ऐसी है तो फिर उसमें तुम लोग ये दोनों बुक्स, अगर तुम्हें ये येलो कलर की बुक निकालनी है तो फिर तुम लोग ये दो बुक्स हाथ में उठा सकते हो और फिर ये बुक निकाल सकते हो. लेकिन अगर मैंने ये पूरा मतलब जो बुक्स है, बुक्स का कलेक्शन, वो अगर मैंने बॉक्स में रख दिया और मुझे ये येलो कलर की बुक निकालनी है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन पहले ये बुक निकालेंगे, फिर उसके बाद ये और फिर ये. सो दिस फॉलोज दी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स एनालॉजी. सो उससे क्या है कि लास्ट जो एलिमेंट लास्ट जाएगा वो फर्स्ट आउट आएगा, मतलब जो एलिमेंट हम लास्ट में ऐड करेंगे वो हम पहले निकालेंगे. फिर ये these are the importance of the stack data structure, why we use it. First is efficient memory allocation. So अगर एक प्रोग्राम तुम लिख रहे हो उसमें बहुत फंक्शंस है, फंक्शंस के अंदर भी फंक्शंस है, तो उसमें जो मतलब फंक्शंस को एक के बाद हम लोग कॉल करने वाले, तो फिर उसको उसका टैग हम रखेंगे कि पहले कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, बाद में उसके बाद भी कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन से वेरिएबल्स असाइन हो रहे हैं. तो उसमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम लोग. फिर उसके बाद है एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेशन. उसमें क्या है कि पार्सिंग और एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन. पार्सिंग पता है किसी को? हेलो, ओके मैं ये बताती हूँ. तो पार्सिंग क्या है कि जो कंपाइल करते हैं हम लोग प्रोग्राम, इंटरप्रेट करते हैं, तो उसमें एक्सप्रेशन जो हमने कोड लिखा है, एक स्टेटमेंट और या एक्सप्रेशन हमने लिखा है, उसको ट्रांसलेट करने में, उसको इवैल्यूएट करने में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है. क्योंकि जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर है वो स्टैक में ऐड होते रहता है और फिर उसको हम इवैल्यूएट करते हैं. उसका एक एग्जांपल भी हम लास्ट में देखेंगे. फिर ये अंडू और रीडो फंक्शनलिटी, ये तो हमने बहुत बार यूज भी किया है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में हो गया या पावर पॉइंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में हम चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं या फिर रिप्ले एक्शंस. सो दीज आर दी सम important features or the application of the stack data structure. These are the basic operations of the stack. Push, pop and pick. These are the three primary operations, and is empty, is full. These are the some secondary operations. So push मतलब जो इज सिंपल कि हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं स्टैक में तो उसको पुश कहेंगे, फिर रिमूव कर रहे हैं तो उसको पॉप कहेंगे. लेकिन पॉप ऑपरेशन में क्या है कि जब हम एलिमेंट रिमूव करते हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं कि हम लोग कौन सा एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं. जैसे हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोग एरे में जो किसी भी इंडेक्स पर कोई भी एलिमेंट होगा तो उसको रिमूव कर सकते थे. लेकिन हम लोग स्टैक में क्या करेंगे कि उस पे उसका मतलब पॉप जो फंक्शन है वो अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि जो टॉप का एलिमेंट है वही रिमूव होगा और फिर उसके बाद वाला एलिमेंट रिमूव होगा. और फिर पॉप ऑपरेशन क्या करता है कि जब वो एलिमेंट को रिमूव कर देगा तो वही एलिमेंट वो रिटर्न करेगा. और पिक क्या है कि पिक रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक. मतलब पॉप जैसे ही, लेकिन वो डिलीट नहीं करता एलिमेंट को, बस वो रिटर्न कर देता है कि टॉप पे अभी ये एलिमेंट है. फिर इज एम्प्टी और इज फुल, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये चेक करने में यूज किया जाता है. इज एम्प्टी मतलब स्टैक एम्प्टी है या नहीं, या फिर इज फुल मतलब स्टैक फुल है या नहीं. तो इज एम्प्टी और इज फुल ये ऑपरेशन हम आगे देखेंगे कि इसका यूज क्या है. सो फर्स्ट वी विल सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे. हम लोग
स्टैक को एरे और लिंक लिस्ट दोनों यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम एरे का देखेंगे कि एरे से हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लिंक लिस्ट का देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ये एक स्टैक, सपोज इसको कंसिडर करो कि ये एक स्टैक है, अभी एरे के फॉर्म में है। तो उस पे क्या है कि 0 जो इंडेक्स है उसको हमने टॉप एज अ टॉप डिक्लेयर किया है, लेकिन हम प्रोग्राम में टॉप को -1 डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि -1 इसलिए क्योंकि तभी वो ऐसे इंडिकेट करेगा कि टॉप अभी स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर एरे में 0 इंडेक्स पे कोई 0 इंडेक्स होगा तो वह हम कंसिडर करते हैं कि वहां पर कोई एलिमेंट है, इसलिए हमने टॉप को -1 डिक्लेयर करना है इन द प्रोग्राम। So a stack can be implemented using array and store continuously in a memory. यहाँ पर continuously वो store होता जाएगा, और फिर टॉप ये जो वेरिएबल है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर तुमने यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड किया, फिर वहाँ पर एलिमेंट ऐड किया, तो मतलब जो लास्ट में एलिमेंट होगा तो वो टॉप, मतलब उसको हम टॉप कहेंगे कि अभी ये टॉप पर ये एलिमेंट है, और फिर इंडेक्स से उसको एक्सेस करेंगे। अगर टॉप 6 है तो उस इंडेक्स पे 1 ये एलिमेंट है। We need to add the elements and remove the elements from the top of the stack. So for that we are going to use a pointer which is always going to point the topmost element of the stack, जहाँ ये हम लोग देख रहे हैं इसमें इस इमेज में। So it will point to the element at index 0 when stack is empty. So this is a push operation. हम पहले ये कोड देख लेंगे छोटा सा, और फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे VS कोड में। तो पुश हम कैसे करेंगे कि ये स्टैक में एक स्टैक है और उसमें ये पहले से एलिमेंट्स है। तो एक स्टैक का एक प्रॉब्लम है कि हम लोग उसकी साइज जो होती है वो फिक्स रहती है। अगर हम एरे से इम्प्लीमेंट करें तो उसकी साइज फिक्स रहेगी, और फिर अगर हम लिंक लिस्ट इसलिए यूज करेंगे क्योंकि उसकी साइज हमको बढ़ानी है, मतलब डायनेमिक रखनी है, क्योंकि कितने भी एलिमेंट्स आने दो फिर भी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एरे यूज कर रहे हैं और स्टैक का साइज है फिक्स 4, 0 1 2 3 4, ये 5 एलिमेंट्स है उसमें, तो अगर हम उससे ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करने को ट्राई करेंगे ना, तो फिर उसमें स्टैक ओवरफ्लो ये एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही कंडीशन चेक किया है। अगर हम कोई एलिमेंट स्टैक में पुश कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो स्टैक पहले से ही भरा हुआ है या फिर उसमें जगह है या नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि स्टैक ओवरफ्लो मतलब स्टैक फुल है या नहीं। उसके लिए हम लोग हमने एक कंडीशन दिया है कि टॉप इज इक्वल टू n-1, मतलब अभी ये जो स्टैक है उसकी साइज कितनी है 4, और फिर उसमें हम लोग चेक करेंगे कि अभी जो इसकी साइज 5 है, तो फिर अगर जो टॉप है पहले टॉप यहाँ था फिर वो इंक्रीज होते जाएगा जैसे हम लोग एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो फिर उसकी साइज हम लोग चेक करेंगे कि टॉप अगर 1 से कम है जो साइज है स्टैक का, तो फिर इसका मतलब क्या है कि स्टैक फुल हो गई है, तो फिर स्टैक ओवरफ्लो ये एरर आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारी स्टैक ओवरफ्लो मतलब स्टैक अगर फुल नहीं है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं एलिमेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले टॉप जो है उसको 1 से इंक्रीमेंट करेंगे और फिर एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो हम लोग पहले इसका कोड देखते हैं अभी, क्योंकि वैसे समझ में नहीं आएगा। कोड दिख रहा है गाइस सबको? यस मैम। ओके, सो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया है, फिर उसमें एक टॉप वेरिएबल लिया है। ये हमको चाहिए क्योंकि टॉप एलिमेंट से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि अभी एलिमेंट मतलब कितने एलिमेंट्स है स्टैक में, कौन सा एलिमेंट टॉप पर है, कौन सा एलिमेंट बॉटम पर है। फिर हमने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया है जिसकी मैक्स साइज हमने यहाँ पर दी है ग्लोबल वेरिएबल जो 1000 है। फिर यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर है, उसमें हमने टॉप को इनिशियलाइज कर दिया -1 से। -1 मतलब अभी स्टैक में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। फिर हम लोगों ने ये फंक्शंस लिखे हैं कुछ, उसको पहले हमने क्लास में उसको डिफाइन किया है और फिर यहाँ पे हमने वो फंक्शंस लिखे। तो पहले हमने क्या किया कि स्टैक जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमको अभी पुश करना है 10 एलिमेंट पुश करना है हमें स्टैक में। तो पहले हमने पुश ये फंक्शन को कॉल किया। तो ये पुश ये फंक्शन है,
अभी पहले हम लोग चेक करेंगे कि स्टैक पहले से फुल है या नहीं। अगर वो फुल रहेगी तो हम उसमें एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। तो पहले हम उसको चेक करने वाले, तो हमने इज फुल फंक्शन को कॉल किया। तो इज फुल फंक्शन कहाँ है? यहाँ पर। इज फुल फंक्शन बुल रिटर्न करता है, बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। तो इज फुल फंक्शन क्या करेगा कि अगर टॉप अगर मैक्स साइज जो है वह उसमें से -1, मतलब अगर हमने मैक्स साइज कितने दी कि 1000, अगर 999 मतलब 999 अगर ये रहेगी टॉप की साइज, तो मतलब वो क्या है, स्टैक फुल हो गई। अगर उससे कम रहेगी तो हम कह सकते हैं कि स्टैक में अभी भी जगह है, उसमें हम लोग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो अपनी स्टैक फुल है, इसलिए वो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया तो फिर हम लोग स्टैक ओवरफ्लो प्रिंट करेंगे, मतलब अब हम लोग स्टैक में एक भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन मतलब इज फुल, मतलब ये फॉल्स हो जाती है कि हमारी स्टैक फुल नहीं है, अभी भी उसमें जगह है, तो फिर हम एलिमेंट को पुश करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करें कि टॉप को पहले इंक्रीज करें, क्योंकि हमारा टॉप क्या था, टॉप जो था वो पहले क्या था, -1। अभी वो -1 था, तो क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं था। अगर हमें ऐड करना है एलिमेंट तो उसको हमने इंक्रीज करना है, हम लोग उसको इंक्रीज करेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या है कि प्लस टॉप लिखा है मैंने, तो टॉप जो है वो पहले इंक्रीज होगा 1 से, मतलब अभी टॉप क्या है, टॉप 0 बन जाएगा। और फिर अभी टॉप 0 पे है, 0th इंडेक्स पे, तो हम लोग उसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो पुश करते समय हमने क्या कहा था कि हमने 10 एलिमेंट उसमें ऐड करना है। तो जो टेल एलिमेंट है वो x वेरिएबल में स्टोर है, तो फिर वो टेल एलिमेंट हम लोग इस एरे में डाल देंगे, लेकिन कौन सी पोजीशन पर? 0, टॉप पोजीशन पर। तो अभी हमारे पास एक एलिमेंट है स्टैक में, वैसे ही हम लोग फिर से स्टैक डॉट पुश करके उसमें 20 हमने डाल दिया, तो 20 ऐड हो जाएगा। वैसे ही वो अभी भी चेक करेगा कि हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं, मतलब इज फुल फंक्शन कॉल करके, और फिर उसमें टॉप को इंक्रीज कर देगा और फिर वो ऐड कर देगा। देन नेक्स्ट इज टॉप पुश 30, मतलब 30 भी अब ऐड हो गया है। तो हमारे पास 10, 20 और 30 ये जो एलिमेंट्स है वो ऐड हो गए, और 30 ये क्या है कि लेटेस्ट एलिमेंट है, हमने ये लेटेस्ट ऐड किया, तो ये टॉप है, मतलब 30 टॉप है। फिर 10 जो है उसका इंडेक्स है 0, ये 1 और ये 2, तो 2 जो है ये टॉप हो गया, मतलब टॉप की वैल्यू अभी 2 है। देन नेक्स्ट इज अ पीक फंक्शन। पीक का हमने देखा था कि पीक क्या होता है कि जो टॉप पर है एलिमेंट वो उसको रिटर्न कर देगा। तो फिर हम देखते हैं कि पीक का कोड क्या है। तो पीक फंक्शन यहाँ पर है। पीक फंक्शन क्या करेगा, एक एलिमेंट रिटर्न कर देगा इंटीजर। तो पीक फंक्शन में भी हम लोग चेक करेंगे कि अगर हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी रहेगी, मतलब स्टैक में कुछ भी एलिमेंट नहीं होंगे, तो फिर हम लोग क्या रिटर्न करेंगे ना। अगर उसमें कुछ एलिमेंट होगा फिर हम उसको रिटर्न करेंगे कि यहाँ पर ये टॉप एलिमेंट है और ये रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर वो एम्प्टी है तो हम कुछ भी एलिमेंट रिटर्न नहीं कर सकते। तो उसके लिए फर्स्ट हमने इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल किया। तो इज एम्प्टी फंक्शन है यहाँ पर। तो इज एम्प्टी फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे कि टॉप इज इक्वल टू -1। अभी हमने पहले देखा कि टॉप को हमने इनिशियली -1 रखा था। -1 मतलब स्टैक एम्प्टी है। तो हम वही चेक करेंगे, अगर हमारी टॉप की वैल्यू -1 है तो वो एम्प्टी है, तो वो रिटर्न कर देगा कि ट्रू, मतलब अभी टॉप स्टैक एम्प्टी है। तो वही हम लोग चेक करेंगे। तो पीक में अभी हमारी स्टैक की मैक्सिमम साइज तो 1000 है और हमने 3 एलिमेंट्स ही ऐड किए, तो हमारी स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, उसमें एलिमेंट्स है। तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर हम इस फंक्शन से इस फंक्शन से हम लोग रिटर्न कर देंगे, और फिर पहले ये प्रिंट करेंगे कि स्टैक इज एम्प्टी। सो अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग टॉप एलिमेंट रिटर्न ही नहीं कर सकते। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, तो फिर उसमें हम अभी जो टॉप की इंडेक्स क्या थी, हमें पता है कि पीक फंक्शन से 30 ये एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा, और 30 की इंडेक्स क्या है 2, 0, 1 एंड 2। तो 30 की इंडेक्स है 2। अभी टॉप की वैल्यू मैंने बताया था कि टॉप की वैल्यू 2 है, तो एरे ऑफ 2 मतलब 30 रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा 30, मतलब 30 जो एलिमेंट है वो अभी टॉप पे है, तो फिर वो रिटर्न हो जाएगा यूजिंग दिस पीक फंक्शन। देन नेक्स्ट इज अ पॉप ऑपरेशन।
सो पॉप से क्या करेंगे हम लोग, एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर चॉइस नहीं है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हम लोग इसमें एलिमेंट्स नहीं ऐड कर सकते कि हमें ये एलिमेंट रिमूव करना है या फिर कोई और एलिमेंट रिमूव करना है। जो स्टैक के टॉप पे रहेगा वही एलिमेंट हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमने पॉप फंक्शन को कॉल किया है, तो पॉप फंक्शन का कोड देखेंगे हम लोग। अभी स्टैक में दो प्रॉब्लम है। पहले हमने डिस्कस किया कि स्टैक ओवरफ्लो, और अभी ये आप लोग देख सकते हो स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो मतलब उसमें उसकी स्टैक मतलब स्टैक की जो साइज है वहां तक हम पहुंच गए। मतलब स्टैक में अब हम कुछ भी एलिमेंट्स मतलब कोई एक भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, तो वो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। और अब जो स्टैक अंडरफ्लो ऑपरेशन है उसमें क्या है कि स्टैक में अभी कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो एम्प्टी है। तो हम लोग पॉप क्या करेंगे, अगर स्टैक में कुछ भी एलिमेंट नहीं है प्रेजेंट तो हम लोग कुछ पॉप ही नहीं कर सकते। इसलिए हमको पहले ये चेक करना पड़ता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो इसके लिए हमने इस एम्प्टी फंक्शन को कॉल किया, और फिर अगर टॉप की वैल्यू -1 रहेगी तो वो एम्प्टी है, अगर -1 नहीं रहेगी तो वो एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास 3 एलिमेंट है उसमें, इज एम्प्टी नहीं है हमारी स्टैक। तो ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमने क्या किया, टॉप को माइनस कर दिया। मतलब टॉप की वैल्यू जो है हमने 1 से डिक्रीज कर दी। मतलब टॉप अभी जो ये 30 एलिमेंट है वो निकल जाएगा, और टॉप जो पहले टॉप की जो वैल्यू 2 थी वो अब टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अभी टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, 20। सो फिर से हमने क्या किया कि पीक फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे? गाइज माइक ऑन करके आंसर दो। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible. ओके, सो प्लीज एनीवन टेल मी कि अगर हमने यहाँ पर ये स्टैक डॉट पीक ये फंक्शन को कॉल किया है और हमारे पास इतने ही एलिमेंट्स है स्टैक में, तो फिर यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, इस लाइन का आउटपुट क्या होगा? गाइस आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग डाउट पूछ सकते हैं मुझे। हेलो, 10 कैसे आएगा विधि? 20. हाँ, ओके, सो 20 इज द आंसर। पिक का मतलब वो फंक्शनलिटी वही है कि हम लोग टॉप एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हैं, उसमें डिलीट नहीं होगा ये एलिमेंट, लेकिन वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हम लोग को रन करके देखते हैं। तो देखा हमने कि उसमें 30 और 20 आंसर आ गया। तो 30 क्या था, पहले हमने पॉप ऑपरेशन किया था, तो 30 जो पहले टॉप मोस्ट पोजीशन पे था वो 30 एलिमेंट पॉप होने के बाद वो डिलीट हो गया। और फिर आपको तो पता है कि पॉप जो फंक्शन है वो एलिमेंट डिलीट करने के बाद उसको रिटर्न भी करता है। और फिर उसके बाद हमने एक पीक फंक्शन 2 बार कॉल किया था यहाँ पर। तो पहले जो पीक फंक्शन था उसने 30 रिटर्न किया, क्योंकि हमने तब 30 एलिमेंट टॉप पे था। और फिर उसके बाद हमने पॉप किया, मतलब 30 जो है वो हमने पॉप कर दिया। तो फिर उसके बाद हमने फिर से पीक फंक्शन को कॉल किया, तो अब 20 एलिमेंट टॉप पर था, तो इसलिए वो प्रिंट हो गया। यहाँ तक समझ में आया? हेलो, किसी को डाउट हो तो बता सकते हो, अभी पूछ सकते हो मुझे। तो ये एक एनिमेशन है, मुझे ऐसे मिला है, तो हम लोग इस पे देखेंगे कि कैसे एलिमेंट्स ऐड होते हैं अरे में। सपोज मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड कर दिया 89 और फिर उसको पुश कर दिया। विजिबल है स्क्रीन गाइस सबको? Yes. हाँ, तो इसमें हमने देखा कि पहले यहाँ पे उन लोगों ने 0 लिया है, लेकिन यहाँ पे इनिशियली -1 रहता है। तो अगर हमने इसमें 89 ये एक एलिमेंट है, मैंने उसको ऐड कर दिया, तो फिर वो क्या करेगा, ये 0th इंडेक्स पे 89 एलिमेंट सेव हो गया। और अभी टॉप क्या है हमारा, 1 है। टॉप इंक्रीज हो गया, राइट? टॉप इंक्रीज हो गया और एलिमेंट उसमें ऐड हो गया। और फिर हमने अभी 78 एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, तो फिर वो नेक्स्ट इंडेक्स पे स्टोर हो गया। और टॉप क्या है, 2। तो अगर हमें पॉप करना है तो कौन सा एलिमेंट पॉप होगा पहले,
78, क्योंकि वो लेटेस्ट एलिमेंट था। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पॉप ऑपरेशन जो है वो डिलीट करने के बाद अपनी वैल्यू भी रिटर्न करता है कि उसने कौन से एलिमेंट को डिलीट किया था। तो फिर जो 78 एलिमेंट हमने लेटेस्ट ऐड किया था वो डिलीट हो गया। तो अभी अगर मैंने फिर से पॉप बटन पे प्रेस किया तो 89 डिलीट हो जाएगा। तो स्टैक में रैंडमली हम लोग कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। So this was the implementation using array। और अभी लिंक लिस्ट में किसी को डाउट नहीं है ना, क्योंकि हम लोग देखने वाले कि लिंक लिस्ट में हम लोग कैसे स्टैक को विजुअलाइज करेंगे, कि स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम लोग। तो ये तो हमने देख लिया कि पॉप और पुश क्या है। पीक भी देख लिया हमने कि पीक में हम लोग टॉप एलिमेंट रिटर्न करते हैं, फिर एम्प्टी चेक करते कि स्टैक अपनी एम्प्टी है या नहीं, फिर फुल है या नहीं। सो दिस वाज ए एल्गोरिथम। तो वो हमने कोड में देख ही लिया कि हमने एरे का साइज डिफाइन किया, फिर उसके बाद टॉप को -1 पे इनिशियलाइज किया, फिर पुश पॉप पिक इज एम्प्टी, दिस ऑपरेशंस जो हमने कोड में देखा वही है। So now we are going to see implementation of stack using the linked list। तो मैं पहले एनिमेशन दिखा देती हूँ क्योंकि उससे इजी हो जाता है समझने में। तो मेरे पास और एक एनिमेशन है, तो उसमें पहले जो है टॉप उसके पास कोई भी मतलब वैल्यू नहीं है, वो किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा, पॉइंट नहीं कर रहा। तो उसमें हम लोग एक सपोज एलिमेंट ऐड कर देते हैं। तो इसको ध्यान से देखो, अभी 89 ऐड हो गया है और जो टॉप है वो अभी पॉइंट कर रहा है 89 को। 89 जो है वो लेटेस्ट एलिमेंट है और स्टैक में वही है, तो वो 89 को पॉइंट कर रहा है क्योंकि अभी वो टॉप मोस्ट एलिमेंट है। अगर हम लोग कुछ और ऐड कर देते हैं तो टॉप जो है वो इसको पॉइंट करेगा, और फिर जो हमने जो लेटेस्ट एलिमेंट ऐड किया था उसका जो नेक्स्ट है वो जो पहला एलिमेंट था उसको पॉइंट करेगा। तो ऐसे ही हम लोग अगर जो एलिमेंट है उसको ऐड करते रहेंगे तो वो जो लेटेस्ट एलिमेंट होगा उसको टॉप पॉइंटर पॉइंट करेगा, और फिर जो लेटेस्ट एलिमेंट है वो उसके प्रीवियस एलिमेंट को पॉइंट करेगा कि मेरे बाद ये एलिमेंट इंसर्ट हुआ, मेरे पहले ये एलिमेंट इंसर्ट हुआ था। सो पॉप करके देखते हैं हम लोग। तो 78 ऑब्वियसली वो पॉप हो जाएगा और फिर से जो टॉप का पॉइंटर है वो फिर से 89 पे आ जाएगा। तो गाइज हमने देखा कि अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसमें हमने स्टैक इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग लिंक लिस्ट। तो मुझे कोई बता सकता है कि हम लोग जो लिंक लिस्ट है उसके बिगिनिंग में एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं? हमेशा बिगिनिंग में ही क्यों ऐड कर रहे हैं एलिमेंट? हम लोग तो लिंक लिस्ट में कहाँ पर भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, राइट? लेकिन स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग बिगिनिंग में ही क्यों एलिमेंट ऐड कर रहे हैं? किसी को आइडिया है कुछ? अगर लिंक लिस्ट पढ़ा है आपने, आपको समझ में आया है, तो फिर आप लोग बता सकते हो इसका आंसर। हेलो, हेलो गाइस, बोर हो रहा है क्या? ओके, दैट वाज द रीजन। लेकिन मैं एक हिंट देती हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हिंट। ये कैसे रिलेटेड है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? मतलब हम लोग लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं नोड और पहले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने उसको पहले ही ऐड करने के लिए क्यों चुना? लीफ ऑफ प्रिंसिपल। और कुछ किसी को और आइडियाज है या फिर कोई गेस कर सकता है? इज बेटर देन, हाँ ओके। तो मोहित ने अभी आंसर किया। तो उसमें क्या है कि O(1) मतलब जो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो कब होती है? जब ऑपरेशन मतलब इंसर्शन और डिलीट ऑपरेशन, मतलब कोई भी ऑपरेशन होगा तो वो जब कांस्टेंट होता है तब वो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अगर हम लोग टॉप में ऐड कर रहे हैं एलिमेंट, तो
फिर वहां से उसको डिलीट करने के लिए भी उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। लेकिन अगर हम लोग 30 मतलब जो लास्ट है वहाँ अगर ये एलिमेंट को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमको इसका एड्रेस चाहिए। तो फिर पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कल हर्ष ने बताया होगा कि वाइल डिलीटिंग हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं, फिर उसको पॉइंटर मतलब नेक्स्ट पे उसको पॉइंट कर देंगे। मतलब उसमें एक ओवरहेड है कि हम लोग एक ज्यादा का वेरिएबल ले रहे हैं और फिर हमको जो लास्ट का एलिमेंट है उसको डिलीट करना है, तो फिर हम लोग उसको ट्रैवर्स भी कर रहे हैं लिंक लिस्ट को, तो उसकी वजह से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम जो नोड है वो बिगिनिंग में ही उसको इंसर्ट कर रहे हैं और फिर जो बिगिनिंग वाला ही जो एलिमेंट है वो है हमारा टॉप एलिमेंट होगा। जो भी मैं अभी बता रही हूँ गाइस वो क्विज में है, क्विज से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो आप लोग उसको मतलब ध्यान से सुनिए। तो जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हो कि हमने ये सारे एलिमेंट्स ऐड किए लिंक लिस्ट में। फिर जो 45 है वो टॉप था और फिर उसके बाद हमने पॉप ऑपरेशन को कॉल किया। तो फिर उसके बाद जो अभी लेटेस्ट एलिमेंट था 45 जिसको टॉप जो है वो पॉइंट कर रहा था वो रिमूव हो गया और फिर उसके बाद 60, 32 ये सब एलिमेंट्स हमारे पास बच गए। तो अभी 60 हमारा टॉप है। फिर से अगर हमें पॉप करना है तो कौन सा एलिमेंट पॉप होगा? 60। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं अभी मैसेजेस नहीं पढ़ सकती गाइस, माइक ऑन करके बोल दो कोई तो। Yes. Okay. So this is the algorithm for लिंक लिस्ट से हम लोग कैसे मतलब स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सिंपल है सब, मतलब वही हम लोग चेक करें कि स्टैक फुल है या फिर एम्प्टी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हम लोग क्या करें कि पहले ये तो पता है कि हमने क्लास बनाया, फिर टॉप को नल से रिप्रेजेंट कर दिया और फिर क्योंकि लिंक लिस्ट में इंडेक्सिंग नहीं होती राइट, तो उसमें हम लोग -1 0 ऐसे कुछ मतलब वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते। तो फिर ये मेथड हमने पुश मेथड है उसमें हम लोग डेटा ले रहे हैं और जो न्यू नोड है हमने जो क्रिएट किया यूजिंग नोड स्ट्रक्चर, तो न्यू नोड का नेक्स्ट होगा वो टॉप होगा। क्योंकि हमने देखा यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई एलिमेंट ऐड किया तो फिर जो न्यू नोड है अभी जो ये 90 है वो न्यू नोड था, तो उसका नेक्स्ट क्या होगा? वेट, सो न्यू नोड का नेक्स्ट है टॉप और फिर टॉप को ही हमने न्यू नोड बना दिया है। फिर उसके बाद है मेथड पॉप का क्या है कि हम लोग उसमें एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, तो उसमें पहले हम लोग चेक करेंगे कि टॉप नल है या नहीं। अगर नल होगा तो स्टैक अंडरफ्लो होगा और फिर टॉप को हम टॉप डॉट नेक्स्ट, मतलब अगर हमको रिमूव करना ही है एलिमेंट तो हम नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर देंगे उसमें। फिर उसके बाद है पीक, जो पीक फंक्शन है वो क्या करेगा? रिटर्न कर देगा टॉप, जो टॉप में अभी जो डेटा प्रेजेंट है वो, सॉरी फिर पिक जो है वो जो टॉप एलिमेंट है उसको रिटर्न करेगा। पहले भी उसमें हम लोग चेक करें कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, और फिर ये इज एम्प्टी फंक्शन है। अगर टॉप नल होगा तो हमारी स्टैक जो है वो एम्प्टी है। सो दिस वाज सिंपल। फिर उसके बाद अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं स्टैक ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ये हमने पढ़ा है वैसे बहुत बार, अभी सुना भी आप लोगों ने कि स्टैक ओवरफ्लो मतलब वो एक्सीड हो जाएगा उसकी साइज से, मतलब स्टैक में हम लोग ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं, बस बल्कि उसका जो साइज है स्टैक का वो फिक्स है। लेकिन अगर अंडरफ्लो है तो उसका वो एरर कब जनरेट होगा? जब स्टैक में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो गाइज हम लोग एक प्रॉब्लम देखने वाले थे घर सजाने के लिए, नहीं बताऊंगी, लेकिन FI से क्लोज कर दो ये इसकी हम लोग प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम लोग मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी को पता है ये क्या है बैलेंस पैरेंथेसिस? मतलब क्या करते क्या है हम लोग इसमें?
Hello. These notations are usually used for like stack numerical solving. नहीं मतलब सिंपल मैं पूछ रही हूँ कि बैलेंस पैरेंथेसिस मतलब उसका मीनिंग क्या है कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है उसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं Like for every opening parenthesis there should be a closing parenthesis. यस तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास अभी ये प्रॉब्लम हम लोग फेस करते ही है जैसे कोड में तुम्हारे अगर तुम लोग कुछ कोड लिख रहे हैं पाइथन में तो मतलब कुछ नहीं है ब्रैकेट्स का लेकिन अगर तुम लोग सी प्लस प्लस जावा किसी में भी कोड लिख रहे हो अगर तुमसे एक भी पैरेंथेसिस मिस हो जाता है मतलब अगर तुमने एक फंक्शन को ओपन किया यूजिंग कर्ली ब्रेसेस और फिर उसको क्लोज करना ही भूल गए तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें कोड जो एडिटर्स हो गए या फिर जो मतलब वो चेक करेंगे पार्सिंग करेंगे तो उसमें बैलेंस पैरेंथेसिस मतलब ये प्रॉब्लम अराइज होगा तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग यूजिंग स्टैक तो वो हम अब देखेंगे इसमें तो पहले क्या है कि हमने एक स्ट्रिंग लिया ये ब्रैकेट्स है अभी हम इसको देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ये बैलेंस है क्योंकि जो ये पैरेंथेसिस है वो क्लोज हो रही है फिर उसके बाद जो है जो ब्रेसेस फिर वो भी क्लोज हो रही है इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है लेकिन ये हम स्टैक से कैसे पता करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे 1 by 1 हम ये एलिमेंट स्टैक में ऐड करेंगे लेकिन उसमें भी एक प्रोसेस है हमने पहला एलिमेंट स्टैक में ऐड कर दिया देन हमने नेक्स्ट एलिमेंट स्टैक में ऐड कर दिया एंड देन थर्ड एलिमेंट हमने स्टैक में ऐड कर दिया तो फिर उसके बाद ये जो थी वो ओपनिंग पैरेंथेसिस या ओपनिंग ब्रैकेट्स थी जो हमने अभी स्टैक में ऐड की है अगर अब हमें चेक करना है कि इसके बाद अगर हमें कोई क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलती है तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए हम लोग अगर हमें कोई फर्स्ट एनकाउंटर होगा कि कोई क्लोजिंग पैरेंथेसिस दिख रही है आपको तो फिर जो स्टैक में टॉप एलिमेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसमें अभी टॉपिक कौन सी ब्रैकेट थी ये ब्रैकेट थी शायद हाँ तो ये ब्रैकेट थी पैरेंथेसिस तो वो रिमूव हो गई नेक्स्ट ऑपरेशन में क्यों क्योंकि हमने होता है यार इतना सा था आपका इफ एल्स और ये भाई साहब तो फिर हमने कब से 15 साल से गूगल कर रहा है एक डेवऑप्स इंजीनियर को हम एक लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें कि अभी एक क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट था और फिर उसके बाद ही एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गए तो मतलब ये बैलेंस हो गया राइट तो हमने उसको पॉप कर दिया और फिर उसके बाद हमने अब हमारा पॉइंटर यहाँ पर है तो ये हमने एनकाउंटर किया कि ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है और फिर हमारे पास टॉप पे क्या था ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस तो अगर हमारे पास हम यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक यूज करें कि जो टॉप पे एलिमेंट होगा और जो हमारा अभी करंट एलिमेंट है करंट कैरेक्टर वो हम लोग चेक करेंगे कि मतलब वो ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब एक दूसरे से अपोजिट है या नहीं तो अगर वो अपोजिट है तो फिर हम लोग स्टैक में जो टॉप एलिमेंट था उसको रिमूव कर देंगे फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट तो उसको हमने देखा और फिर हमारे पास टॉप पे जो एलिमेंट था वो स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये भी अपने मतलब एक दूसरे के अपोजिट है तो फिर हमने उसको भी रिमूव कर दिया तो इसमें लॉजिक ये है कि स्टैक अब एम्प्टी है तो जब हमें ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्टैक एम्प्टी मिलती है तब हम लोगों को पता चल जाता है कि ये बैलेंस पैरेंथेसिस है या उसके बाद अगर बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं होगा तो कोई तो एलिमेंट इसमें रह जाएगा तो वो बैलेंस पैरेंथेसिस को मतलब फॉल्स रिटर्न करेगा कि अभी ये पैरेंथेसिस का जो आपने स्ट्रिंग लिया था वो बैलेंस नहीं है तो ये सिंपल लॉजिक है हमने पहले क्या किया 1 by 1 हमने एलिमेंट ऐड किए जब तक हमें ओपनिंग ब्रेसेस मिल रही है तब तक और फिर जब हमें फर्स्ट क्लोजिंग ब्रेसेस या ब्रैकेट कुछ भी होगा तो वो अगर मिल रहा है तो उसको हमने चेक किया कि विथ टॉप मोस्ट एलिमेंट अगर वो टॉप मोस्ट एलिमेंट के अपोजिट है तो ही हम उसको मतलब जो स्टैक में एलिमेंट है टॉप वाला उसको रिमूव कर देंगे पॉप कर देंगे और वैसे ही हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे और अगर स्टैक एंड में आपको एम्प्टी मिलती है तो फिर वो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल है और हमारी जो हमने पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग ली थी वो भी बैलेंस है ये समझ में आ गया सबको एवरीवन यस
ओके, समझ में आए तो थम्स अप दे दो गाइस। अभी यहाँ तक कोई भी डाउट है? क्योंकि ये लास्ट पार्ट था, क्योंकि स्टैक एक इजी डेटा स्ट्रक्चर है, हमने उसके कुछ टाइप्स भी नहीं है, तो मैंने एक प्रोग्राम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया था कि हम लोग बैलेंस पैरेंथेसिस चेक करने वाले थे, तो इसको आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसमें सेम ही कोड रहेगा, जस्ट एक कंडीशंस वगैरह आपको चेक करनी पड़ेंगी कि जो अभी टॉप पे एलिमेंट है वो और फिर जो एलिमेंट को हम लोग अभी पॉइंट कर रहे हैं, जो हमारा करंट एलिमेंट है, वो एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज जो इज एम्प्टी, इज फुल, जो फंक्शंस हो गए वो हम मतलब वैसे ही वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर पुश जो फंक्शन है वो भी हम लोग ऐसे ही ले सकते हैं। उसमें बस आपको पुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमने यहाँ पर ये स्ट्रिंग ली थी, तो उसमें ये स्ट्रिंग थी, राइट, तो एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मतलब वो कैरेक्टर एरे को आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा और एक एक कैरेक्टर को आपको पुश करना पड़ेगा। और फिर पॉप भी वही ऑपरेशन है, सेम पीक अगर आपको रिटर्न करना है कि अभी कौन सा पैरेंथेसिस टॉप पर है। तो सो दिस इज सिंपल गाइज, आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आई होप आप वो कल सॉल्व करके लाओ, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो मैं कल आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन भी दिखा दूंगी। सो अब तक किसी को प्रॉब्लम है, किसी को डाउट है कौन से कॉन्सेप्ट में? हेलो? No, all clear. How to get started Okay, with so DevOps? that's good. और मतलब वो क्या फर्स्ट स्टेप्स होंगे आप? क्विज की लिंक आ गई है, आप लोग क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। Yeah guys, about the stacks, if you have any doubts, hand raise karo. If not, then put up in the chats that you have no doubts and all clear. I need responses quickly. Yeah, so indeed it was a nice session, and first let me clear the quiz and then we'll be done with the stacks. Okay, so Nikita, are we done with the presentation? Yes, we are done with presentation. Yeah, you can stop this presenting. Yeah. So yeah guys, let's start with the quiz. Go to the Slido. Any volunteer for this? तो दोस्तों कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे SRS I need someone from second year or third year, mostly from second year. Is there anyone who wants to volunteer? Like, ना कोई भी आ जाओ. Aishwarya. Who is this one? Aishwarya. It's not a lead actually. Devani Borse. Can you present your skin? Okay, just give me 2 minutes. Yeah, okay. So guys, go and sign up with the Slido, or I think you can join as a guest as well, maybe. Go to the quiz guys. I'll be starting the quiz as soon as when he starts the presentation. Yeah, I'm live at the quiz and I'm only seeing 25 people. So guys, everyone should join. Please share the link. Devyani is not getting the link.
Yeah, okay. I'll share it again. Maybe she joined from another device. Okay. So yeah, guys, get ready. I'll be starting the quiz. Devani, share the screen. Yeah, okay. So let's start the quiz. And first question is on the screen. Yeah. What is the fundamental principle of this stack data structure? I think everyone is clear with this one. क्योंकि जितने easy लगे तुम्हें या फिर how many of you have solved them, तो stack तो इससे easy है. Can imagine a CD holder or a box with containing a books. Mostly CD holder का example ले लो. Like how do we store the CDs over there? There goes a ring and we put up the CDs in it. And if you want to remove something, you only get that CD that is above everyone. So that's how it works. The last in, first out. So yeah, next question. Which operation adds an element to the top of the stack? Quickly. Yeah, and the correct answer is obviously push. फिर भी कुछ लोग 3%, 7% people are like giving it pop and insert. Bro, add an element है, निकालना नहीं है. So yeah, and the next question is, what happens when a pop operation is performed on an empty stack? We use is empty, right? So you'd know. Yeah, and the correct answer is an error is generated. Obviously, error would be there because you are performing pop operation on an empty stack. If you have put up the is empty there before checking, like before popping something out, then there won't be like any change and like there will be some notice. Yeah, the stack is empty. But if not, there would be an error. So remember this one. Okay. And the next question. Which operation retrieves the top element of the stack without removing it? Yeah, I think सबको ये आना चाहिए. Pop and peep का like difference. Yeah, obviously it was peak and 85% people are correct. फिर भी 15% are wrong. Guys, you should learn. Good. And the next question, what is the time complexity of a push operation in a stack? You could guess it, right? Push operation. इसके बारे में she was discussing in the linked list implementation. Like why do you implement it through the head? So yeah, the better complexity, that was overfound. The next question, which data structure can be easily implemented using a stack? Come on guys, I need answers. This is an easy question. It's like
I think she took an like example over there ना. फिर भी इतने सारे लोग कैसे गलत हो गए? 62% people are wrong here. Only 24%. Yeah, guys. हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में, पैरेंथेसिस मैचिंग. Yeah, still you gave it wrong. Why? This was not expected. Okay, let's go. Then in a stack, which element is at the bottom of the stack? So, which? And yeah, I think everyone should be correct over here. Obviously, कौन सा element होगा? Like या philo principle use करके. Obviously, the first element that was inserted there should be, I think, how it was base element. क्योंकि मैं बताना भूल गई कि जो स्टैक में जो मतलब फर्स्ट एलिमेंट होगा जो बॉटम में रहता है उसको बेस एलिमेंट कहते हैं. So yeah, there could be two answers, first and base also, right? Yes. Yeah, first and the base element people would be considered over there. जिन्होंने top and last बताया, you both are wrong. Okay. The first element which was inserted in the stack always remain at the base, and it can be also called as base element. So yeah, both answers are correct. And the next question, which of the following is the stack's main disadvantage? क्या हो सकता है? What do you think? अपने अपने हिसाब से बताओ थोड़ा थोड़ा, like yeah, this could be the disadvantage. So yeah, limited storage capacity, as we like, if we implement using array, they could be that could be a disadvantage. Then the next question, which operation checks if the stack is empty or not? This was the question asked in Q as well, so I think everyone should be correct over here. Quickly guys, सबके आंसर्स चाहिए मुझे. 40 के 40 people चाहिए था. And we still got 29 answers. So the correct answer is empty function, not is stack empty. We implement is empty because over in Java we have like we can use pre-implemented functions like there that is being already defined over there. You can directly use stack, data structure, or like array list or queue directly without like implementing the logic, without implementing the data structure. Over there we use is empty, so that's a standard over there. To whether you are creating your own stack or whether you are directly using it from the data structure or from the package, you implement as in the standards. So is empty is a standard if you are checking with the like is it full or not. That's how, I mean, is it empty or not. And the next question is which what data structure can be used to implement a stack efficiently? Like how many implementations we saw. And this is the last question, so answer correctly. Yeah, linked list, obviously, as we have discussed earlier, for the dynamic size itself and the addresses or the pointers using CPP. If you are using CPP, with those we could implement stack efficiently, and this could improve the dynamic behavior of the stack. So yeah, that was the quiz, and we have the leaderboard. And at top position we have Abhijit with 8 of 10. I think 2 questions were wrong. So yeah, stack में बहुत लोग थोड़े गलत हो गए. 10 out of 10 कोई नहीं है इस बार. Then for second position Amit, third Sanika, Itkalkar, then fourth Kunal, Shantanu, Prapti,
Prathamesh, Shraddha, Mohit, and Samarthya, and list goes on. So yeah, guys, that was about the quiz. We'll be finishing with the quiz. So guys, about today, stack and queue clear हो चुका है. So किसी को कोई doubt है पूछ लो, अभी मुझसे पूछो या फिर the presenters or the teachers or today's session are there. So ask us. Any doubts, guys? Yeah, applause to चालू रखो. For today's session, for Nikita and as well as for Abhijit, they have like taught well. I think it was a great session. सबको अगर समझ में आया तो yeah, clap for them. Yeah, obviously stack and queue are heavy data structures. Still we covered it in like 1 hour because people are like, yeah, एक हफ्ते में पूरा DSA like complete करना है bro. How is that possible ना? फिर भी हमने cover करने का try किया for you guys only. So yeah, I think they deserve an applause. Continue रखो. Once again, let me hear some claps from everyone. And we'll be winding up with this session before and feedback link. Let me get it. Do we have management team over here? मोहित, आज की प्रेजेंट ले ली ना तूने? हाँ, सेशन 1 की ली थी, सेशन 2 की भी ले ली थी. हाँ, ले ले अभी. And after that, I'll be sending you the feedback on the like feedback link on the DSA Bootcamp itself. वहाँ पे ही भर दो जिन्होंने प्रेजेंट रहा है, जिन्होंने नहीं रहा उन्होंने भी भरा तो भी ठीक है. चलो